उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स ब्रेकिंग न्यूज। कलिकाल सर्वज्ञ और कलयुग के पर्चाधारी देव यानी बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी अनेक भक्तों के कार्य पूर्ण करने वाले कलयुग के महान देव माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी का उत्सव भाद्र पक्ष की एकम से लेकर नवम तक मनाया जाता है। नवमी के दिन भक्तों के द्वारा नेजा उत्सव किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन की बात करें तो भक्तों के द्वारा रामदेव जी की उपासना, भक्ति, कीर्तन, भजन और आख्यान जैसे रामदेव पीर के अनेक कार्यक्रम मंदिरों में किए जाते हैं। और जहाँ जहाँ रामदेव जी के मंदिर स्थित है वहाँ वहाँ भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई देती है और बाबा के दर्शन पाकर धन्यता प्राप्त करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। उसी के तहत हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाबा रामदेव जी के भक्तों की संख्या ज़्यादातर दिखाई देती है। राजस्थान के रामदेवड़ा की बात करें या गुजरात के अनेक स्थानों पर छोटे बड़े मंदिर रामदेव जी के स्थित है। हम बात करते हैं तो अरवली ज़िले के मोड़ासा शहर में रामदेव जी के राजपुर में रामदेव जी मंदिर और उसके साथ साथ इसरोल में भी इच्छापूर्ण रामदेव जी मंदिर आया हुआ है। वहाँ आज नवमी के दिन बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे और नेजा उत्सव का बड़ा धामधूम से मनाया गया, जहाँ पर भक्तों ने ज़्यादातर नेजा उत्सव में हिस्सा लिया और दर्शन पाकर धन्यता प्राप्त की और हर एक ने सर्व मंगल विश्व मंगल की भावना के साथ यह उत्सव मनाया। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा यह एक भक्तिमय माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा था। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरवली। અમે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી અહીંયા દર સુધી બીજના દિવસે દર્શન માટે આવીએ છીએ, બીજ ભરવા માટે। સાથે સાથે આજના આ નેજા મહોત્સવમાં પણ દૂર દૂરથી ગામથી નેજા લોકો લઈને ભગવાન રામદેવજીના ચરણોમાં પધારી રહ્યા છે। આજનો દિવસ ખૂબ જ આનંદ અને ઉલ્લાસથી ઉજવાઈ રહ્યો છે। જેટલી જનમેદની એટલી ઉભરાઈ રહી છે કે કોઈનો પાર નથી। દરેક માટે અહીંયા ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી કરવામાં આવી છે। ખૂબ જ સુંદર ભગવાન રામદેવજી મહારાજના આશીર્વાદથી અમે લઈને ધન્ય પાવન થઈ ગયા છે અને ભગવાન દરેકના મનોકામના પૂર્ણ કરે એવી આજના પ્રાર્થના કરીએ છીએ। જય રામદેવ। સ્ટાર્ટ। આજે ભાદરવી સુદ નોમના દિવસે ઈશ્વર ખાતે ઈચ્છાપૂર્ણ રામદેવજી દ્વિતીય નેજા ઉત્સવ ઉજવાયો। એમની અંદર આજુબાજુના ઘણા ગામડામાં હજારો ભાવિક ભક્તો આવ્યા। પોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે આજે નેજા ઉત્સવ ઉજવી અને પોતાની માનતા પૂર્ણ કરી। આજના દિવસે પૂરા ભારતની અંદર નેજા ઉત્સવ ઉજવાતો હોય છે। એમાં દરેક મંદિરની એક વિશેષતા હોય છે કે તો બાઉજીના નેજા ઉત્સવ ઉજવાતો હોય છે। 9 દિવસની નવરાત્રિ પૂર્ણ થયા પછી આજે ભગવાનને નેજા ઉત્સવ ઉજવી અને લોકો પોતાનો પ્રેમ ભાવ ભગવાનને સમર્પિત કરતા હોય છે। જય અલગ જય રામદેવજી મહારાજ।